Okay. So once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. Okay, hope you people are doing well. And so let us start with the new topic. In the last session, we started with I think we have done with the multi-threading concept of the thread, then user level thread and kernel level thread and all that. Okay. So as I told you that we are going to start with the new topic. This is not the new topic. This is the topic from the same chapter, but still I treat it as a new topic. Okay. This is CPU scheduling algorithm. Okay. So in this particular topic, we're going to learn about the different algorithms which are going to process, which are going to schedule, which are going to execute your process, which you have entered, which you have submitted for the execution. Okay. This you have not submitted your CPU. You were using the CPU. You were using the computer. So at that time, you were using a lot of applications. So all those application in terms of the process, it has got submitted, and how to schedule and how to execute those number of processes. So and that is a matter of concern we have right now. So each and every algorithm has different scheme that how it is going to execute your process. Okay. एक चीज ये मुझे बताओ आप लोग के ऑडियो आपको आ रहा है बराबर बिकॉज आई हर्ड द रिकॉर्डिंग Yes, sir. ओके बिकॉज I've gone through the recording but actually it was quite fluctuating जैसे आपका sinusoidal wave होता है ना तो sinusoidal wave की तरह ऐसा कभी कम कभी ज्यादा ऐसे हो रही थी रिकॉर्डिंग चेक किया मैं So, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है आई थिंक मेरे साइड से तो कोई इश्यू नहीं है पूरा पहले पहले ऐसे नहीं होती थी एक्चुअली ओके होप्स ओके अभी से थोड़ा सही आए बिकॉज दिस एनवायरनमेंट इज शांत साइलेंट है कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है स्टिल सी ओके सो so in this particular chapter in this particular topic what we are going to learn first let me write those things this is all about the CPU scheduling okay so I'm writing this is the CPU scheduling the chapter name is CPU scheduling the chapter is not CPU scheduling, but in the book it is given. So I've written CPU scheduling. Okay. In this particular CPU scheduling, first the very first thing is objective. The objective behind the CPU scheduling. What are the different objectives of CPU scheduling? Because हर एक चीज का objective होता है ना, as we know, हर एक चीज का हम लोग कुछ ना कुछ objectives और उसके goals set करते हैं. So for the CPU scheduling, we have few objectives. We'll learn about those objectives. Then um, hmm. so we have scheduling labels also that is labels so we have high level scheduling we have low level scheduling we have intermediate level scheduling okay so those are very small terms okay these topic objective level and other few topics will be coming soon so these topics are added in this particular topic in order to understand the algorithm properly okay so that we'll learn each and everything when we learn each and everything about the algorithm so at that time it will not be difficult for us to understand different things okay so because we'll be having the ground plain for us okay so पूरा ground हमारे पास में रहेगा so it will be very easy for us to understand the algorithm okay algorithms are very simple कुछ ऐसा कुछ बहुत hard and fast नहीं है कुछ algorithm है कुछ process है जो कि follow करना है okay so we'll try to learn the scheduling levels. That is, different level include high level, intermediate level, and the third one is low level scheduling. Okay. After that, we have types of scheduler. We have types of schedulers. Okay. So first of all, what is scheduler that we will learn? तो पहले मुझे लगता है पहले आना चाहिए scheduler. ठीक है. Scheduler. Then उसके बाद में उसके types. Okay. What are the different types of scheduler? Again, we have three types of schedulers. One is the long-term scheduler, second is the medium-term scheduler, and the third one is the short-term scheduler. Okay, that will learn. Very very simple. And after that, you can have a different differentiation between all these three types. Okay, exam में आता नहीं है, but I'm mentioning. हालांकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, but still I'm mentioning all this thing in order to understand the topic clearly. Okay. Then we have one more term that is context switching. Okay,
context switching. So what is this context switching that we will learn? Context switching. And then after context switching, we have the last subtopic, which is scheduling criteria. Okay, so scheduling. Second, तो हटाना पड़ेगा. I'm not able to write. Scheduling criteria. Okay, in scheduling criteria, we have around 6 or 7 points, okay, which we will discuss among us. Okay, these are the supportive topics. These are the supportive topics which help us to understand the types of algorithm. Okay, and then last we have scheduling algorithm. The last one we have scheduling algorithm. Okay, and those algorithms are, the first one is FCFS, that is first come first serve. The second one is SJF, that is shortest job first. The third one is priority one, priority. Okay, the process will be executed based on the priority. And then we have RR, that is round robin fashion algorithm. Okay, then we have more also. One is the multi-level queue scheduling algorithm, and the last one is multi-level feedback queue scheduling algorithm. Okay, तो ये जो है दो है, इसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी we have added because it is in the syllabus. सिलेबस में ये भी नहीं है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इसमें शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, एफसीएफएस, एक और कुछ छूट रहा है, इसमें मेंशन नहीं है शायद, हमारे से मेंशन है दैट विल. ठीक है, so just you need to focus all these topics in this CPU scheduling topic. Okay, एक काम करता हूँ मैं, इसको नेमिंग करते हैं, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स स्लाइड्स हमारे काम की नहीं है कुछ, तो स्लाइड से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपने Google Jamboard से. Okay, so you are going to refer all this Jamboard. I'll share with you. I will download it and then I will share it with you. Okay, this is part one. I'll take the new. Part two. Okay. Okay. So let us start with the first one, that is objective. Okay, what are the different objectives? Okay, first of all, try to understand what is CPU scheduling. What we are going to do first, try to understand it. So basically, CPU scheduling is, it means that we have number of processes. Okay, we have number of processes which wants to execute. Okay, why they want to execute? Because their application wants to run. As I've given you one example, that we have VLC player, we have my computer, okay, we have MS Word, we have MS Paint. All these four applications we have opened. Okay, so after opening all these applications, what will happen inside and in background? What thing will happen? So these things are happening. Okay, we are trying to understand these background processes. Okay, so when you double click on the my computer, so my computer will open. So before opening my computer, what will be the situation inside it? The situation will be like when my computer will be double clicked, so one process for the my computer will be created in the background in the task manager. When you double click on the VLC player, so one process for that VLC player will be created inside this particular background, या फिर inside the task manager. So two process has been created. Okay, अब पहला process आपका execute हुआ, वो execute हुआ, और उसके बाद में आपका दूसरा आया, दूसरा भी execute हुआ, but we are switching also. ठीक है, कभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कभी इसके ऊपर. साइमल्टेनियसली आप दो जगह पे तो क्लिक नहीं कर सकते कि VLC प्लेयर में आपने प्ले का बटन क्लिक किया और माय कंप्यूटर के अंदर आपने ड्राइव पे क्लिक किया. दो चीजों को साथ में हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव ओनली वन कर्सर. ओके, so when we click when we attend only one application at a time, so my processor will execute that particular application. Okay, फिर जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो विंडो पे जाते हैं, तो वो विंडो पे जाने के बाद आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका क्या होता है? ये स्विचिंग होता है. आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर विल स्विच फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन. ओके, और वो जो स्विच कर रहा है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को, तो बेसिकली किसको स्विच कर रहा है? वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को स्विच हो रहा है. ओके, सो दिस स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अनदर प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग.
ओके, आगे टॉपिक आने वाला, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। सो स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस, लेट मी शो यू। सो we have one process, we don't have one process, we have one application, okay, that is we have opened my computer. Okay, this is my computer. Okay, you double click on the my computer, so my computer is open now. Okay, you have double click on the VLC player, so VLC player is open now. Okay, so जैसे ही आपने ओपन किया, ओपन होने के बाद में यू हैव फोल्डर्स, यू हैव फाइल्स एंड ऑल दैट, यू हैव प्ले बटन, यू हैव पॉज बटन, यू हैव फास्ट फॉरवर्ड वगैरह वगैरह, ये आपका सीख बार, ठीक है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस माई कंप्यूटर, तो बेसिकली माई कंप्यूटर का कुछ तो एक प्रोसेस होगा, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, कोई तो प्रोसेस उसका नाम रहेगा, ठीक है। VLC player, for this VLC player also will be having some sort of process, okay, which is running in the background, and it is running in the background. That's the reason this VLC player is visible to us also. Okay, so this is ABC, the process name. This is the program name. This is the program name. Okay, this is the process name. Okay, it will be different or it may be different, और थोड़ा बहुत नाम सेम भी हो सकता है, हमारा सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। तो process, this is the process name, this is the program name, this is the program name, this is the process name. Okay, so when we switch to this particular application, like my computer पे आप लोग ने क्लिक किया, so आपका जो CPU है, आपका जो processor है, that processor will concentrate on this particular process. Okay, yeah, यानी आपका जो ये वाला my computer है, ये वाला आपका रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। और जहां पर आपका VLC है, तो VLC आपने जहाँ VLC पे क्लिक किया, उसको छोड़ के VLC पे किया, तो ये आपकी विंडो हाईलाइट हो जाएगी और वो बैकग्राउंड में चले जाएगी। ओके, सो योर प्रोसेसर विल कॉन्सेंट्रेट एंड विल फोकस ऑन दिस ABC प्रोसेस। ओके, तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग। फिर जो आपका होता है ना, यहाँ से यहाँ स्विचिंग, यहाँ से यहाँ स्विचिंग, ओके, सो दिस स्विचिंग इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसको बहुत डिटेल में बताया इन लोगों ने, तो डिटेल के अंदर के बजाय हम लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यहाँ पर नाम मैंने मेंशन कर दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हाँ, हम लोग इसको नहीं लेते हैं, हम लोग को एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना था, लेकिन अब चूंकि टॉपिक आ गया था इसके लिए। सो दिस इज द बेस एक्चुअली। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बट स्टिल आई एम कवरिंग सो दैट यू विल गेट सम सरफेस। Okay, so first of all, because we have to learn about the scheduling algorithm. Okay, so we are learning the objectives of those scheduling algorithms. Okay, तो different algorithms के objectives क्या होना चाहिए, वो जो आपके जो algorithms है वो कैसे काम करना चाहिए, उनके objectives क्या होना चाहिए। So the very first objective which is given in the book is be fair. Okay, be fair मतलब कि भाई honest रहो, और ऐसा नहीं कि चलो ये मेरा प्रोसेस है, ये तुम्हारा प्रोसेस है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, but still we can have some hard code also. So be fair, it means that the scheduling discipline is fair if all the processes, because these are the objectives which are made when we are designing the scheduling algorithm. So we have to be fair for all the processes, not for a single process which is coming के उसको हम लोगों ने पहले एग्जीक्यूट किया, बाद में जो पहले आया था उसको बाद में एग्जीक्यूट किया, ऐसे ऐसे तो कुछ है। So we have to be fair. Then maximize throughput. Maximize एक ये टर्म है जो आप लोग ने शायद पहली बार सुने होंगे। Anyone have any idea about this particular word, that is throughput? What is throughput? नहीं, throughput actually networks में, अरे response तो actually maximum work done per unit time. Very good, very good. So this is a very general one. Okay, you will find and you will hear this particular term. You will go through this particular term in the networks also, and at every place wherever the task is concerned. Okay, so per unit time, how much task is being performed. Okay, so per unit time, जैसे कि for example network में बोलते हैं, this is your wire. Okay, so from at this particular point, एक सेकेंड में कितने बिट्स यहाँ से गुजरे हैं। ओके, एक सेकेंड में यहाँ से कितने बिट्स पास हुए हैं, दैट्स द थ्रूपुट ओवर हियर इन द नेटवर्क। ओके, बट यहाँ पर हम लोग क्या करना है
कि एक पर यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना कितना टास्क हुआ है, कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं, कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं, कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं. सो वी कैन गो इन दिस पर्टिकुलर. ओके, so we have to maximize the throughput. Okay, so that the purpose of this particular objective is that maximum number of processes will be executed per unit amount of time. Okay, ऐसा नहीं हो कि मतलब बहुत ही, अगर ऐसा होगा तो फिर जो इसकी एफिशिएंसी हो रहेगी, आपके algorithm की जो efficiency रहेंगी, it will be reduced. Okay, and we don't want any algorithm which is having very less efficiency. Okay, each and every algorithm must have a good efficiency so that the maximum will get the maximum throughput also. Okay, so this is the second objective. These are the very common one, exam में कुछ पूछता नहीं, but we are just going through. We have to maximize the number of interactive users receiving acceptable response time. So be predictable. A given job, whatever is given, should run in about the same amount of time. Okay, so whatever amount of time we are giving, so whatever time which has been allocated, for example in the round robin session, each and every process is received an equal amount of time. Okay, for example we have four processes running at a time. So according to the round robin scheduling algorithm, each and every will be given, four millisecond का time. तो पहले वाले को 4 मिली सेकेंड, दूसरे वाले को 4 मिली सेकेंड, थर्ड वाले को 4, फोर्थ वाले को 4. ठीक है. Even if your process one wants to execute for 5 milliseconds, but we have allocated only 4 milliseconds for each and every process. After completion of the fourth one, again the turn for the process one will come, and it will execute for 1 millisecond more because it need 5 milliseconds to execute or to complete the execution process. Okay, so we have to give equal amount of time. तो यहाँ पर मैं mention करता हूँ, be predictable. The next is minimize overhead. Minimize overhead. Sometimes it may require the IO, ठीक है, नेटवर्क और एनी अदर एक्सटर्नल रिसोर्स. ओके, तो ये सब करने के लिए ऑब्वियसली जो ओवरहेड है बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? obviously आपका running process है P1. Okay, so P1 has completed its execution for I think 40% completed. Now it requires external resource, so it has gone to the external one, go to the sleep state, गया जाके एक्सेस किया, वापस से रेडी पे आया, फिर रेडी से फिर रनिंग में आया. आई नो, मतलब कि आपको ये चीज पता है, यू नो. तो वहां से वापस आया 40% के बाद में, अगेन 20% एग्जीक्यूशन किया. 20% आफ्टर 20% ऑफ एग्जीक्यूशन, अगेन इट रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल रिसोर्स. ओके, या कोई और प्रोसेस को लगेगा, वो वापस से जाएगा, जाके एग्जीक्यूट करेगा, वापस से रेडी पे आएगा, फिर रनिंग पे. सो दिस लॉट ऑफ ओवरहेड, वी हैव टू मिनिमाइज दिस पर्टिकुलर ओवरहेड. ओके, तो जितना कम से कम हो उतने आपका जो एल्गोरिथम है, इट विल गिव द मोर एफिशिएंट रिजल्ट. और भी इसमें बहुत सारे हैं, बट जो स्टार्टिंग वाले जो बेसिक थे, बस वही इंपॉर्टेंट है. इवन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, एंड और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी नहीं आता है, बट फिर भी हम लोग इसको देख ली. ओके, चलो मेन हम लोग को टॉपिक पे जो आना है, शेड्यूलिंग लेवल्स नाउ. ओके, पार्ट 4 मैं ऐसे बनाते जाता हूँ. सो शेड्यूलिंग लेवल्स. ओके, scheduling labels. Okay, as I told you that we have three different types of labels. Okay, starting with the high level, second is the intermediate, and the third one is the low level scheduling. Okay, so this is high level scheduling. Then है second है आपका intermediate level scheduling. Okay, and the third one is low level scheduling. Low level scheduling. अभी levels क्या है basically? We'll try to understand. If you remember the diagram, because this process set diagram is very important. Everyone remember that diagram? Hamza, Hamza.
आवाज नहीं आई हमजा? नहीं हमजा? खान शोएब, खान शोएब। अरे वाह, किसी की आवाज नहीं आ रही है। मेरी वॉइस या उसकी वॉइस? खान सना। खान सना। हम्म। खान मोहम्मद साकिब। अरे बाप रे। आई नीड टू स्टॉप ओवर हियर। कोई है कि नहीं मीटिंग में? या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? And why these people are not responding? Khan Sana Praveen has left the meeting. Hmm. Listen, those who are still listening and not responding, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि if you require attendance then please let me know. Okay? और कोई लेक्चर बैठने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती का यहाँ पर आप लोग का भी डेटा वेस्ट करेंगे, आप लोग का बैटरी वेस्ट होंगी आप लोग की, तो कुछ बैठने की जरूरत नहीं है। तो दोज आर लिसनिंग, वो उतने 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 लोग रिक्वायर्ड है मुझे। ठीक है? कहीं और से आता हूँ मेरे को। प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सो वी लर्निंग अबाउट द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो लेट्स, छोड़ो जाने दो, अभी देखते हैं। So we're learning about the scheduling levels. Okay, so we have three different levels of scheduling. One is the high level scheduling, intermediate level scheduling, and low level scheduling. Okay, and not because I just asked you to you people that say you remember the diagram or not. Okay, so it was important because it is your new, that is the process is created over here. Then we have ready. Okay, this is the new. This is the ready state. This is the running state. Okay, and this is the dead state. In between of that, we have one state which is um, sleep or waiting state. Okay, तो sleep और waiting state. Okay, so यहाँ से यहाँ आपका जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ से सीधा डेड हो जाते हैं। और रनिंग से स्लीप में भी आते हैं, फ्रॉम स्लीप इट कम्स टू द रेडी स्टेट ऑल्सो, एंड इन स्लीप फ्रॉम स्लीप टू द डेड स्टेट, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। Okay, so I hope you remember this diagram, the process state diagram. I told you that this diagram you will have to recall this particular diagram, every time you need to recall it. Okay, the process is created, so it comes to the new state now. Okay, where the process is created,
When it geared up with all the required resources, then it comes to the ready state. Now it is ready to go to the school, okay, or to go for the running state. So it comes to the ready state. Now all the process are waiting like anything over here. Okay, then one by one process will be given to the running state. When it gets the time of the CPU, when the CPU started execution, then it comes to the running state. And meanwhile, if it completes the execution, then it goes to the dead state. Okay. While running, if it requires any external resource, then it go to the sleep state and access the IO. Okay. So IO dispatch, यहाँ पर हम लोग उसको लिख सकते हैं लेकिन अभी नहीं लिखते. So for IO requirement, it has gone to the sleep state. Then from sleep, it cannot come back to the running state because train चलती भी है. So चलती ट्रेन के अंदर वो नहीं चढ़ सकते. So it has to come to the again ready state. Then after its turn, okay, इसका जो turn आएगा, turn के बाद में again it go to the running state, and from running it goes to the dead state. Okay, so it was the diagram. Okay, so the high level scheduling, just try to understand the high level scheduling. Your high level scheduling is the scheduling where यहाँ पर आता है आपका, जहाँ पर आपका न्यू से रेडी में जाता है. सो न्यू से रेडी में जाने के लिए आपका यहाँ पर इसको बोलते हैं हाई लेवल शेड्यूलिंग. तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ हाई level scheduling. Okay, when your scheduler because we are going to understand this term later, but I'm introducing this term right now only, that this is the high level scheduler. It is the part of the operating system. It is a component of operating system which helps the processes to go for the scheduling. Okay, so एक छोटा सा component है. So we have high level scheduling. High level scheduling is the one where your process is moved from the new state to the ready state. ठीक है, मतलब ये जहाँ पर आपका process create होते हैं, उसके बाद में जो ready state में आते हैं, तो आपकी जो scheduling है वो है high level scheduling. यानी कि आपका process create हुआ, ठीक है, तो क्रिएट होने के बाद में उसको क्या किया आपने, भाई चल तेरी बॉटल पकड़, तेरा बैग पकड़, तेरा टिफिन पकड़, तेरे पैसे पकड़, तेरी पास पकड़, सब कुछ उसको आपने दे दिया और उसको बोलेगा चल जाके अब चला जाए तू. तो नाउ यू आर रेडी. ठीक है, तो ये जो काम करने वाला ये जो प्रोसेस है आपकी हाई लेवल शेड्यूलिंग कहलाती है. दिस इज द हाई लेवल शेड्यूलिंग. ओके, सो आई एम मेंशनिंग ओवर हियर दिस इज हाई लेवल शेड्यूलिंग. ओके, then we have intermediate level scheduling. Okay, so intermediate level scheduling comes over here. ठीक है, मैं यहाँ पर उन सबको मेंशन कर रहा हूँ, सॉरी सर्कल नहीं करता हूँ वरना वो प्रॉब्लम देगा. So this is high level scheduling and this is low level scheduling. Okay, when this scheduling occurs between the ready and the running state, where the process is geared up with all the required resources. Now the CPU is ready. Now the CPU is ready and CPU will execute that particular process. So जो वहां से यहाँ पर जो लाने का जो scheduling है, तो ये आपकी intermediate level scheduling कहलाती है. When your process is moved from a ready state to the running state, so this scheduling is termed as intermediate level scheduling. Okay, then we have a low level scheduling. Okay, so this here low level scheduling comes at this particular place where your process has gone to the IO requirement. Okay, it was having some requirement of IO operations it has to perform. So it has gone to the sleep state. Okay, after accessing the IO resources, it will come back to the ready state. Okay, not to the running state. You remember this thing. So after IO access, it will come back to the ready state, not to the running state. So when it comes to the ready state, so this particular scheduling is known as low level scheduling. Low level scheduling. Okay. So this low level scheduling comes or performed between the sleep or waiting state to the ready state. Okay. Just याद रखो कि scheduling कहाँ पर हो रही है. So we have, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, but this question may be asked in the viva. ठीक है, what are the different levels of scheduling and what are the different types of scheduling and where it is performed. So you can easily understand, you can easily let them understand how it is done with the help of the diagram. So छोटा सा diagram बनाने, this diagram is very simple. New, ready, running, dead, और नीचे आपका sleep और waiting state. और properly arrow mark करने के बाद में you can present that where the high level scheduling is being performed, where the low level scheduling is being performed, and where the intermediate level scheduling is being performed. Okay, so I hope this particular concept you have received.
समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? What are the different levels of scheduling? Even still we have not started the actual topic, because I want you to understand the basic terms of all. These topics are not given in the syllabus, but still I'm just covering all these things so that you will understand the main topic. Okay, so this is high level scheduling, intermediate level scheduling, and low level. तो भाई न्यू स्टेट से लेकर रेडी स्टेट तक लाने में जो शेड्यूलिंग करना, क्योंकि देखो वहां पर बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं। आप अपने नए नए एप्लीकेशन खुलते गए, नए नए एप्लीकेशन ओपन करते गए, तो जैसे जैसे एप्लीकेशन आते जाएंगे तो उनको उनका उनका प्रोसेस क्रिएट हुआ जैसी, तो वहां से उनको रेडी करवाने के लिए लाना, तो एक शेड्यूलिंग हुई। ठीक है, मतलब आपने एक प्रोसेस को लाया, उसको रेडी करके रेडी के पास दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने दूसरे प्रोसेस को उठाए, और जो मतलब कि जिसका प्रोसेस क्रिएट हो चुका था, उस एप्लीकेशन को उठाए और वहां से उसको रेडी करके सब रिसोर्सेज ला के दे दिए और रेडी के पास दे दिए। हो गया सेकंड। फिर वेटिंग स्टेट से डायरेक्ट कैसे टर्मिनेट होगा? Sometimes it is called the abnormal execution. Sometimes it may happen cause of the system failure. Sometimes it may happens with cause of the आपका सिस्टम मतलब सिस्टम फेलियर है, सिस्टम क्रैश है, एब्रप्ट जिसको बोलेंगे आपका पावर ऑफ है, लाइट चली गई अचानक। सो while it was accessing some IO external resources or IO resources, so meanwhile accessing IO resources, again it has to come back to the ready state, but वो ready state आने से पहले वो IO एक्सेस नहीं कर रहा था, तो उसी टाइम पे आपका आपका सिस्टम बंद हो गया, या फिर आपने कुछ आपके सिस्टम के अंदर आपका सिस्टम क्रैश हो गया, आपका ओएस क्रैश हो गया, वो बात तो वही है, और फिर आपका एप्लीकेशन क्रैश हुआ, तो ये सब चीजों के अंदर आपका वो कहाँ पर जाएगा, वो डेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो मतलब इसको हम लोग बोलेंगे abnormal termination, because simple we have simple term that is abnormal termination, abnormal डेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट वन ये जो वाला आपका है ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल टर्मिनेशन है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दिस इज नॉर्मल टर्मिनेशन, दिस इज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, सो दीज टू थिंग happens in this particular state। okay, even you will find lot of diagrams in the book, और अलग अलग चीज आपको दिखेंगी, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन, यू कैन रेफर, यू कैन ड्रॉ दिस वन आल्सो। ठीक है, कहीं दूसरा डायग्राम दिखने की जरूरत नहीं। ओके, so these are the scheduling levels। okay, let me just save it। now we are going to learn about the very important topic, that is types of scheduler। okay, so सबसे पहले बात हम लोग ने शेड्यूलर की किए थे। so सबसे पहले शेड्यूलर। okay, as I told you that the scheduler is the operating system component। okay, it is the operating system components which takes the process and its schedule। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपना डिपार्टमेंट है, so they are scheduling lectures of all the faculties, they are scheduling lectures of all the faculties with the help of the timetable। ठीक है, तो उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल किया है, the first lecture on Monday, the first lecture will be taken by me, second lecture will be taken by second this person, third, fourth, five, and so on। so they have scheduled the process। okay, they have scheduled the lectures of all the faculties on Monday। okay, so this is one of the component। okay, in the operating system it is one of the component which schedule all the processes for execution। एग्जीक्यूशन कौन करने वाला है? सीपीयू, मतलब प्रोसेसर करने वाला है। okay, the processor is going to execute all the processes। okay, so we have one component which is again the part of the operating system only, it is one of the operating system component which schedule all the processes for we have three different types of, so I let me write down the definition of this particular scheduler।
This is operating system component or module, so that you will remember this one. This is operating system component which schedule schedule all the processes, all the processes uh, for execution, execution by processor. ओके, सो ये डायग्राम आपके पास, सॉरी ये शीट आपके पास में रहेंगे तो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन और कहीं नहीं. सो दिस इज द आर कस्टमाइज्ड डेफिनेशन. So scheduler is basically an operating system component which schedule, which manages, which schedule all, which are actually, this schedule is the term, okay, which include lot of tasks. Okay, so we are using this term only. जैसे कि मैनेज करना, लाइन अप करना, क्यों करना, रेडी करना, तो सारी चीजें आपके शेड्यूल में है. ठीक है. So we schedule all the processes for execution by the processor, because all the processes are going to execute, executed by whom? प्रोसेस को कौन एग्जीक्यूट करेगा? सारे के सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाला आपका प्रोसेसर है, मतलब आपका सीपीयू है. तो इफ समटाइम्स इफ इट इज रिफर्ड एज द सीपीयू, देन कोई टेंशन लेने की, कोई मतलब सोचने की बात नहीं है. सो कभी कभी प्रोसेसर लिखा रहेगा, कभी कभी सीपीयू लिखा रहेगा. सो लेट मी राइट दिस एज अ सीपीयू. Okay, so this is the definition. Now we have again three different types of scheduler. Okay, we have three different types of scheduler. One is the long-term scheduler, and you will realize that the thing what we have learned in the previous topic, that is levels of scheduling, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली नाम अलग दिया है. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दिस इज मीडियम टर्म शेड्यूलर, medium term scheduler, and the last one is short term scheduler. Okay, so these are the three different types of scheduler: long term, medium term, and short term scheduler. Okay, अब वही डायग्राम को आपको रियलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं. I'm just opening the spreadsheet so that I can write. New document. Presentation. Okay, that I can write easily. क्यों नहीं आ रहा है? चलो ठीक है. So we were talking about the types of scheduler. So as I told you that the types of scheduler के अंदर हमारे पास में types of scheduler. Okay. So types of scheduler में हमारे पास में तीन types के scheduler है. So one is the long term scheduler, second is the medium term scheduler, and the third one is the short term scheduler. Okay. अब आपको मैं वही चीज बताता हूँ, डायग्राम सेम डायग्राम से हम लोग रेफर करने वाले हैं. दिस इज द न्यू, this is the ready, this is the running state, this is the dead state. Okay, I hope this particular diagram is visible to you all. Okay, so this is my new state, this is my ready state, where the processes are ready for execution. When the process will come for the running or for the execution, it comes to the running state. If it has gone for the execution of IO operation, to perform the IO operation, then it will go to the sleep or waiting state, and this is the dead state. Okay, so the process will come from the new to the ready state.
फ्रॉम रेडी टू रनिंग, बिकॉज आई एम रिपीटिंग ऑल दिस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसका ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है। सो मतलब ये इसका प्रोसेस डायग्राम के, इसके लिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली इट इज गेटिंग रिपीटेड फॉर ऑल द टॉपिक्स। So after running, it is going to the dead state. Okay, you can come. You if you want to access the IO resources, then it will go to the sleep or waiting state. If you want to come back, if your process wants to come back to the running state, then it is to go for the ready state first. Okay, so this is the basic diagram what we have seen. Now we'll try to understand the types of scheduler. We have long-term scheduler LTS. We have medium-term scheduler MTS, and the third one we have short-term scheduler STS. Okay, तो सबसे पहले आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो कहाँ पर काम करेगा, जैसे आपके हाई लेवल शेड्यूलिंग कहाँ काम की थी। नाउ I just want to correlate this particular levels of scheduling and types of scheduler. Okay, so I am going to correlate this long term scheduler with the high level scheduling. This is long नहीं high level scheduling ना, एक सेकेंड, आप लोग भी आराम से समझ जाएंगे। So this is high level scheduling. Okay, high level शेड्यूलिंग, मतलब जो हाई लेवल शेड्यूलिंग है वो कौन परफॉर्म करता है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर परफॉर्म दी हाई लेवल शेड्यूलिंग। तो कहाँ पर होना चाहिए आपकी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कहाँ पर काम करेगा आपका, यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पर आपके प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं और जहाँ पर आपके प्रोसेस रेडी हो रहे हैं। तो योर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विल परफॉर्म हाई लेवल शेड्यूलिंग बिटवीन द न्यू एंड द रेडी स्टेट। मुझे इसके लिए थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए था, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया वहां से, बट द थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्डिंग, सो यू कैन रिफर इट लेटर ऑल्सो, ठीक है। सो वी हैव द टाइप ऑफ शेड्यूलर विच इज द long term scheduler. The long term scheduler performs high level scheduling, and it schedule the processes which are getting created at the new state, वो वहां से उठा के उनको रेडी पे लाते हैं। हम जैसे देखो बोल रहे थे कि आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ, अब प्रोसेस क्रिएट होकर उसको सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड जो थे वो रिसोर्सेज में उसको रिक्वायर्ड प्रोवाइड किए और लाके रेडी स्टेट पे दे दी। बट ये काम कर रहा कौन है, ये काम करने वाला आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, ठीक है, जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है, विच इज परफॉर्मिंग हाई लेवल शेड्यूलिंग। ओके, विच इज परफॉर्मिंग हाई लेवल शेड्यूलिंग and moving all the processes which are created, it is moving those created process to the ready state by providing all the required resources, ठीक है। तो भाई सब आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर परफॉर्म्स हाई लेवल शेड्यूल। ओके, then we have medium term scheduler. Okay, we have medium term scheduler। यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेडी स्टेट से लेकर रनिंग स्टेट पर जाने के लिए हमारे पास में है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, तो हमारे पास में दूसरा वाला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका जो कहाँ से कहाँ काम करेगा, हम लोग ने पिछले इसमें देखे हैं। तो short term scheduler is the one scheduler which moves all the ready processes which are equipped with all the required resources. We are moving those processes from ready to the running state. Okay, तो उनको ready से running पे लाने के लिए आपका कौन सा scheduler काम करता है, the scheduler name is short term scheduler, which is very very short. Okay, because उसका काम काफी short है और ये सिर्फ ready से running पे, मतलब बस चीजें ready है, the processes are equipped with all the required resources for execution. So वहां से उठाएगा और भाई चल सीपीयू का पहला जॉब खत्म हो गया, नेक्स्ट जॉब देगा, फिर दूसरा खत्म हो गया, उठा के तीसरा देगा, तो ऐसे ही शेड्यूल करते रहते हैं, ठीक है। So we have short term scheduler which is performing between ready and the running state. अब भाई वहां से आने के बाद में आपका जो है मीडियम टर्म शेड्यूलर बचता है, ठीक है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर कैसे काम करेगा, अगेन इट विल वर्क ओवर हियर, because when if your process has gone to any IO requirement, IO operation, maybe your process may require any IO process or any IO, sorry मैं कुछ और बोल रहा हूँ, maybe there may be a requirement where your process wants to perform any IO operation. Okay, so if your process is going for any IO operation, I'm writing here IO operation, and जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा यहाँ पर तो उसको स्लीप में डाल देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द आईओ ऑपरेशन
Your process wants to go back to the running state, but as I told you that we cannot catch the running train. ठीक है, हम लोग रनिंग में जा नहीं सकते डायरेक्टली, बिकॉज अभी चलती ट्रेन में चढ़ने का आपको भी उसका पता है कैसे। तो जब नहीं चढ़ सकते तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप बांद्रा और खार के बीच में है, लेकिन आप चलती ट्रेन नहीं पकड़ सकते, तो आपको बांद्रा जाना पड़ेगा तो खार जाना। तो जो हमारे उसके जो इसके लिए जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है वो है हमारा रेडी स्टेट। तो योर प्रोसेस विल गो टू द, यहाँ पर उसको बोलेंगे हम लोग आयो डिस्पैच। इसका जो एक्चुअली जो टर्म यूज होता है वो होता है आयो डिस्पैच, डिस्पैच। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेड्यूलर जो होता है हमारा, जो कि स्लीप और वेटिंग में जो हमारे प्रोसेसेस है उनको वापस से रेडी में लेकर जाता है, एक एक करके रेडी में लेकर जाता है। तो वो शेड्यूलर को हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, एमटीएस। ओके, सो दीज थ्री, नंबर वन एलटीएस, नंबर टू एमटीएस, एंड नंबर थ्री इज एसटीएस। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट विच वर्क्स बिटवीन द रेडी एंड द रनिंग स्टेट। ओके, you have LTS, that is long term scheduler, because lot of processes are getting created at this particular state and they are being scheduled and moved to the ready state. So this is long term scheduler, and this is short term scheduler, and this is medium term scheduler. Okay, so basically the scheduler is nothing but the operating system ka component, operating system ka component. Okay, operating system component which schedule all the processes, which schedule all processes for execution, for execution. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू विल रिमेंबर द डेफिनेशन एंड यू कैन इजीली से इन फ्रंट ऑफ द वाइवा। ठीक है, सो it is the operating system component, or we can say module, component or module, which schedule all the processes for execution or by the processor. ठीक है, by the CPU or processor, whatever it is. Okay, so it was the definition. These were the types of scheduler, number one, number two, and number three. And this is a diagram from which we will understand the types of scheduler. I hope you people have understood. समझा नहीं समझा कुछ तो बोलो। नहीं समझा शायद। I'm just checking. Just wait, huh? I'm just stopping the recording.